इस जर्नी की शुरुआत होती है यहाँ गंगा घाट पे। इसके पहले जो आपने देखा था बस देख रहे हैं। So this is ऋषिकेश और ये लक्ष्मण झूला है। So we'll start our journey from here. Almost 2 साल हो चुके हैं since I have traveled properly. 2 साल पहले I had done one trek and after that किस्मत कभी-कभी काफी सही हो जाती है। इस ट्रैक पे जाने के लिए मैं जिस हॉस्टल पे रुका था फॉर द नाइट, वहाँ पे ही there were 2 more trekkers who were going to travel with me. So by the time we reached our first stop, इतनी ठंड पड़ रही थी that I was thinking कि अभी यहाँ ये हाल है तो आगे क्या होगा, ये ट्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट देन एक बार सनलाइट आनी स्टार्ट हुई तब थोड़ी जान में जान आई। And this is Lohajung, a village and our base camp. We'll start our trek from here. We stayed overnight over here. यहाँ पे रात में काफ़ी ठंड पड़ रही थी. Temperature goes below sub-zero. And this is our first lesson point. यहाँ पर पहुँचते we realized that this trek is not that easy. We took some time, had some snacks, some refreshments, थोड़ा धूप सेका, we had clicked some pics, actually many pics. So Brahmatal में there are these dhabas जो कि आपके main points पे हैं, so that even if you're not carrying some food or if you're going on a solo trip, you can still explore a little bit on your own, but at the same time you can get some food by these folks. So yeah, I think that's one of the good thing about the trek. Also आपको इन ढाबास पे और maybe sometimes nearby places पे you will find this rhododendron squash, which is basically there is a flower called rhododendron जिसके ये juice बनता है, which is kind of like रूह अफ़ज़ा but still a bit different. स्टार्टिंग में आई वॉज फीलिंग कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या रास्ता है, बट slowly this trek gets beautiful as it opens up. As soon as the forest comes, it's like a completely different experience.
Sometimes I wonder if I would have gone at the same trek when it is like completely green, how beautiful it must have looked. But लाइफ में सबको सब कुछ कहाँ ही मिलता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है. अगर सब मिलने लगे तो फिर लाइफ काफी प्रेडिक्टेबल और बोरिंग सी हो जाएगी. So, इस ट्रैक में जो भी लोग मिले ना, वो ऐसे लगा नहीं कि उनसे पहली बार मिल रहा हूँ. They were all so warm. They were all so मतलब अपना wavelength कुछ मैच कर रहा था. So that is one of the reason कि ये ट्रैक काफी ज़्यादा सही लग रहा था. So on these treks during the daytime when there is sunlight तो temperature थोड़ा सही रहता है, and also since you are trekking during the daytime so your body is warm. However एक बार शाम हो गई तो फिर उसके बाद तो जो ठंड पड़ सकती है भाई साहब. Now it's time for another break. We will rest for some time, drink some water, have some refreshments, and obviously click some pics while we are resting. क्या कर रहे हो भाई? ठीक है ना? So how are you feeling after coming there? Great. Okay. I think it's not really better. Hey, No, partly we came to be really difficult. night only we are there. This is very What is that escape?
नहीं है चल आगे आगे चालू वीडियो वो कैप्चर आगे चल, मैं आ रहा हूँ। तेरे पीछे से लेता हूँ ना, आगे चल। लकड़ी चल रहा है ऊपर भी स्नो मिलेगा। मिलेगा भाई, सब मिलेगा। और इससे ज़्यादा होगा ना वो तो सच बताना ना नहीं, कहीं पर होता है जहाँ पे सब ठंडा हो गया सो आफ्टर स्नोफॉल, उसके कुछ दिनों के बाद व्हेन द स्नो मेल्ट्स, तो wherever सनलाइट नहीं पहुंचती ना, वहाँ पे कुछ पैचेस रह जाते हैं. सो वी डिड फाउंड these snow patches throughout this trek, and whenever we reached near these snow patches, it was like really cold. चलो